Hello friends, welcome to India's largest learning platform. Crack UPSC CSE with India's largest learning platform, Unacademy. To get plus subscription and access unlimited live and recorded courses for India's best educators. What you will get daily live classes. You will get daily live classes. You will get structured courses. You will find live tests and quizzes, and you will find unlimited access over here. These are the major advantages you can find over here. So download Unacademy Learning app and be the beneficial part of that. And about me, this is Dr. Azad. I am for research work in JNU, educating, mentoring UPSC CSE parents over 10 years. Over 10 years, authored books in history, political science, and social issues. I teach UPSC, CSE, UGC, NET, JRF, my Unacademy Telegram channel. Then link is also reflecting before you. To prepare with 100 plus top educators, Sudarshan Gujar, Murnal Patel, Prakash Kumar, Mudit Gupta, Roman Saini, Ayush Sanghi, Aman Sharma, Dipanshu Singh, and Ashish Malik. And comprehensive. Very, very good afternoon, Iftikhar. How are you? How is your health? Today the topic is going to be discussed. It is what colonialism part over there. And the polity and governance IR, geography, science and technology, and CRT history, current affairs, optional courses, Indian economy, environment, ecology, practice test, and answer writing is also important part over there. UPSC CSE icon plus iconic courses are also available with it. Am I audible fully? Am I audible? मेरी आवाज अब तक बहुत अच्छे से आ रही है नहीं आ रही? Tell me frankly about it, because from the day after tomorrow I am going to start complete NCRT. 5 books compilation is there. Material in iOS, then Tamil Nadu, all the things I am going to do it. Okay. So 1 month it is 9,000 rupees, 3 months it is 22,500 rupees, 6 months it is 40,500, and 12 months you will get 49,500 rupees. 24 month it is what? 72,000 only, and 36 month you will get 90,000 overall. And UPSC CSE GS subscription after getting 10%, क्या देखते हैं हम यहाँ पे? What we find over there? We find 10% discount over there. Then you will get 1 month it is 8,100, then 3 months it is 30,250, then 6 months you will get 36,450, and 12 months it is what? 44,550. This is the advantage you can find over here. Okay, so 24 month it is 68,400 rupees, and it is what? 36 month it is 81,000 overall you can find. And after using Azad Azad, you will get 10% subscription. You can see discount over here. Now UPSC CSE GS subscription is also available with you. It is for 12 months 69,500, 24 month it is 1,07,000, 36 month it is what? 1,41,000 rupees, and for 12 month it is 62,550, 24 month it is 96,300, and 36 month you will get 1,26,900 rupees. And if you will use Azad Azad, it is written over here, you will get directly 10%, what we can say, discount over here. Now UPSC CSE optional subscription is also available with you. It is 1 month 5,000 rupees, 6 month it is 22,500 rupees. For 12 month you will get 27,500, 24 month you will get 40,000, and 36 month you will get 50,000 only. And these are the advantage you can find over here. And after getting 10% discount, what you will get? For 1 month 4,500, for 6 months 20,000 you can find over here. Then 24 month it is 36,000 rupees, and use Azad Azad and you will get 45,000 only. So this is the advantage group you can find. And the most competitive game field UPSC CSE battlefield is here, and from December 20 it has already been started over there. Then rank 1 to rank 3 3 month subscription for equivalent Amazon voucher you can find. Rank 4 to rank 150
It is what 1000, and Amazon voucher is also available with you. Then only 6 months is now remaining. इफ्तिखार आपके पास सिर्फ 6 माह है. You should have to be ready for that. Whether you are going to appear or not, it hardly matters to you. But what important thing you should have to keep in your mind? You should have to be ready. Suppose next year you are going to appear, you should have to be ready for this year only. आप अभी से ही तैयार हो जाओ कि we are ready to go with that kind of clung. An unlimited GS batch bilingual pathway to crack UPSC CSE with India's best educators start on 24th December. Full syllabus you can find, full coverage you will find. Nothing to worry, but you should have to ready like that. You are going to crack, you are going to appear this time only. Unlimited GS batch is again available. It is for 2020-21. It is again 2020-22 and 2020-23. You can find over it. Iconic prices is going to be high. You should have to be ready for that too. Topic which I am going to discuss to you, history of colonialism. अभी जो topic मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, this is very interesting thing, and this is interesting because the complete political dilemma, the complete political system, the complete political scenario is based on this origin of, you can say, trade development capitalism. जितना भी इज्म निकल रहा है, जितनी भी थ्योरी निकल रही है, मार्क्सिज्म की बात करेंगे हम लोग जो है कि नहीं, कम्युनिज्म की बात करेंगे, इंपीरियल, जितना भी इज्म की शुरुआत होता है, it started development from colonialism, and it started with the beginning of the modern era. As I yesterday class I told to you that it is going to develop in that part of that, and the main contribution and main, you can say, purpose regarding this one is that the role of exploration, geographical, भौगोलिक जो खोज की गई थी, तभी से ये चीजों की शुरुआत होती है. Voyages of discoveries came to the prominence of the development of colonialism. कोलोनियलिज्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिवेशवाद. टर्म क्या होता है? उपनिवेशवाद. तो यहीं से शुरू होता है dynamic of the modern political, economic, administrative system. It begins from this period too, and this led to the idea of, finally जब आगे मैं बताऊंगा, the development of World War First and Second, the roots started from here. It has changed the complete complexion of the society. It has also completely changed the fabric of the society also. यानी समाज का जो फैब्रिक है, स्ट्रक्चर को भी ये बदल देता है. इसलिए मैंने जेनेसिस से इस चीज को लिया है, ताकि इसमें दो डायनामिक्स है. मेरे पढ़ाने का जो ऑब्जेक्टिविटी नजर आती है, इस चीज के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं. व्हाट इज इंपॉर्टेंट थिंग, द ऑब्जेक्टिव या डायनामिक्स ऑफ द टीचिंग पैटर्न इज व्हाट, जो मेरे एडुकेटिंग का जो पैटर्न है, जिसको आप ध्यान रखेंगे आप. So these are the two dimensions I have considered over here. First is what? Historical development of what we can say, political system in the modern era. This is the base of the, and the second dynamics is that the current political system. The current political system, which I already discussed to you, it is what? Nationalism. तो नेशनलिज्म की शुरुआत कहां से होती है? जब पहले बेस मिलता है किसका है? कोलोनियलिज्म. So this is the basic structure, you have to know about that. And after this nationalism has started, then what we can say, emergence of nation state. I have told you already, nation state. And the first nation state, you know it very well, it was France. And present time also, it is going to be part of that. So this idea, this view, you should have to consider over there. और मेरी जो पढ़ाने का उद्देश्य है, पढ़ाने का जो पर्पस है, इसका डबल डायनामिक्स है. The first dynamics is that the origin of what? Origin of colonialism. And origin of colonialism means origin and development of capitalism, finance, capital phase. So this is one of the important part over there, and this has created a sense of nation building process, and this nation building process led to finally the emergence of World War First, World War Second, and finally what we can say that First World, Second World, Third World, the concept we find over there.
पहली दुनिया की बात करूंगा, दूसरी दुनिया की बात करूंगा, तीसरी दुनिया की बात करूंगा, चौथी दुनिया की बात करूंगा और फिर पांचवी दुनिया की भी बात करूंगा। आज का टॉपिक बहुत ही इंटेंसिव होगा। दिस लुक्स लाइक वेरी इजी, दिस लुक्स लाइक वेरी simplified part of that, but you should have to go in a different domain, in a different dynamics. दूसरे डायनामिक्स और डोमेन में आपको इस चीज के लिए देखना होगा। दैट इज इम्पोर्टेंट। नाउ colonialism, what exactly is colonialism है क्या, and the term is that what exactly is colonialism. So first you will have to understand about that कि colonialism होता क्या है ना। अगर मैं सवाल पूछूं तो जल्दी से जवाब दोगे क्या इफ्तिखार? प्लीज लेट मी नो अबाउट इट। करेंटली व्हाट डू यू, अब तक आप क्या समझते हैं कि colonialism है क्या? आप तो बहुत कुछ समझे होंगे या बहुत सारे शब्द आपके नजरों से गुजरे हुए होंगे या फिर आप उसको इंटरेक्ट किए होंगे, पढ़े भी होंगे। आपके मन में क्या परिकल्पना आती है कि अगर शब्द कोलोनियलिज्म और हिंदी में कहें उपनिवेशवाद आता है तो व्हाट डू यू टॉक अबाउट दिस, व्हाट यू कैन से? प्लीज लेट मी नो क्विकली क्विकली। आर यू गेटिंग माई वॉइस और नॉट? जल्दी से बता दो, आप जल्दी से लिख के बता दो, थोड़ा सा हिंट दे दो so that I can change my ideas and domain and dynamics to teach you. 1 minute. हाँ, yes, take your 1 minute. 30 second लो आप. You should have to develop the idea of, you can say, answering anything in 30 seconds. 1 minute is a very long term, long time. You can say you should have to be alert for answering the thing within 30 minutes. 30 seconds. Sorry, I beg your pardon. 30 seconds. Colonialism. Powerful country controls another country. No, this is not the absolute fact regarding that. Listen to me, and as usual, you used to carry on, keep on your pen and paper along with you. So, what is colonialism? The term colonialism signifies the establishment, exploitation. What is the point? Is that it is establishment. Point is that establishment, then exploitation, then maintenance, then acquisition and expansion of the colonies in one territory from the another territories. Conditions कहने का मतलब क्या है? When a bigger country, when a strong country used to control another country's economic system, and for controlling the economic system, establishment is required, exploitation is required, maintenance is required, and other, you can say, basic system to control is required over there. That is called colonies. हिंदी में बताता हूं, जब एक बड़ा राष्ट्र या एक शक्तिशाली राष्ट्र या एक साम्राज्यवादी राष्ट्र यानी कह सकते हैं राष्ट्र, जब किसी दूसरे राष्ट्र में या जब किसी दूसरे कंट्री में जाकर के वहां पर अपना इकोनॉमिक कंट्रोल रखना चाहता है, इकोनॉमिक कंट्रोल रखने के लिए क्या करना पड़ता है? पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट करनी पड़ती है। उसके बाद क्या देखते हैं? मेंटेनेंस किया जाता है। फिर क्या दिखा जाता है? कंट्रोल किया जाता है उस चीज को। और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि उसका कंप्लीट इकोनॉमिक कंट्रोल, ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, टैक्सेस एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय the bigger territory or the bigger country. That is called colonialism. The process is known as colonialism, and where this process has been convened, where the process has been done, that process, the place is identified as a colony, or you can say that colonization. Is it clear or not? जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब यस और नो में जल्दी से दो। ये समझे नहीं समझे या फिर से मैं बताऊं, रिपीट करूं? प्लीज जल्दी से, क्विकली tell me either yes or no. Not, I don't want more time to spend over here, so I wanted only yes or no. Did you get my point or not? आपने मेरा पॉइंट ग्रहण किया, समझा या नहीं समझा? जल्दी से जवाब दो yes or no में। Am I audible or not? Powerful country controls another country's economic system, another country's trade and business. जहां पर उसका आर्थिक नियंत्रण हो जाता है ट्रेड एंड कॉमर्स के माध्यम से, या फिर कह सकते हैं पोर्ट सिटी के माध्यम से, या फिर कह सकते हैं वहां पे टैक्सेशन के माध्यम से। सो द कंडीशन इज व्हाट? इट एस्टैब्लिश्ड ए फुल फ्लेजेड कॉलोनी। डिड यू गेट माय पॉइंट और नॉट? जल्दी से जवाब दो। ऐसा लगता है कि आवाज मेरी आप तक नहीं पहुंच पा रही है।
जल्दी से इफ्तिखार जवाब दो। इकरा, जल्दी से इफ्तिखार जवाब दो, वेदर यू आर गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। मेरी पॉइंट समझ में आ रही है या नहीं? तो दिस इज व्हाट वी कैन से दैट colonialism, और इसको क्या कहते हैं? colonialism। आपने लिखा है पावरफुल कॉल, यस, वेरी गुड। आपने लिखा क्या है? पावरफुल। नो, पावरफुल कंट्री नॉट कंट्रोल द इकोनॉमिक, ट्रेड, बिजनेस एंड कमर्शियल एक्टिविटीज ओवर देयर, that is called colonialism। and in the process of establishing the colony, what used to happen? establishment करना पड़ता है, exploitation होता है, मेंटेनेंस करना होता है, एक्विजिशन होता है, एंड एक्सपेंशन ऑफ कॉलोनीज इनटू अ टेरिटरी बाय द पीपल ऑफ द अनदर टेरिटरी। इज इट क्लियर टू यू? दिस थिंग यू शुड हैव टू कीप इन योर माइंड, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ोगे तो बार बार ये शब्द आपके दिमाग में, या ये प्रश्न हमेशा सवाल किया जाएगा, दैट इज व्हाट colonialism। This is important thing you should have to keep in your mind. Is it clear to you? Now, it is a set of unequal relationship. What is another significant part you should have to keep in your mind? It is a set of unequal relationship between the colonial power and the colony। दो चीजें नजर आती हैं, यानी एक राज्य में, एक राष्ट्र में दूसरे राष्ट्र द्वारा जो कंट्रोल मैकेनिज्म चलता है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या देखते हैं? वो रिलेशंस जो है अनइक्वल है। जैसे ब्रिटिश साम्राज्यवादी शक्ति भारत में आई, भारत में जब आती है तो बैटल ऑफ पलासी और बक्सर होता है, तो क्या हिंदुस्तान के नागरिक, हिंदुस्तान के शहनशाह या बादशाह या नवाब खुश होते हैं? क्या नहीं। तो इट इज कंप्लीटली व्हाट वी कैन से दैट अनइक्वल रिलेशनशिप। उनके बीच का जो संबंध है, the relations are not at all, you can say, equal part of that, that is what we can say that is called unequal relationship। relationship का जो बेस नजर आता क्या है? that is completely what we can say that is completely unequal part of that। उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? unequal part। उस चीज को क्या कहते हैं हम लोग? unequal part में वो चीज बटा हुआ होता है, that is important part over there। उस चीज को आपको उस ध्यान से रख करके चलना होगा। तो ओवरऑल इट इज व्हाट, ओवरऑल इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? ओवरऑल इस चीज को हम लोग जो पूरी तरह से इस चीज को बताएंगे, कहेंगे व्हाट इज दैट? इट इज अ सेट ऑफ अनइक्वल रिलेशनशिप between what we can say, between we can say, what we can say, unequal relationship between the colonial power and the colony, and often between the colonist and the indigenous, what we can say that इंडिजिनस पॉपुलेशन। और अदर भाषा में जो बात कहते हैं क्या है कि इंडिजिनस पॉपुलेशन, किसकी इंडिजिनस पॉपुलेशन? कॉलोनी की बात करते हैं हम लोग। दिस इज अगेन सिग्निफिकेंट पार्ट ओवर देयर। तो दिस इज व्हाट वी कैन से, दिस इज colonialism। ये पार्ट हिस्सा किस चीज का है? colonialism का है। एंड दिस ऑप्टिमिस्टिक एप्टीट्यूड यू शुड हैव टू कीप इन योर माइंड। आपको ये ऑप्टिमिज्म को रख कर करके चलना होगा। इज इट क्लियर? Now, the term is what? Colonist and the indigenous population। यानी दो तरह की चीजें नजर आती हैं। एक क्या होगा? एक कंडीशंस क्या होगा? फॉरेन कंट्री होगा। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हम लोग कहते हैं, और दूसरा कंट्री कौन है? वो इंडिया है। तो इसमें दो चीजें नजर आ जाती हैं। पहला कंडीशंस क्या नजर आता है? दिस इज इंडिजिनस। और पहला क्या नजर आता है? इट इज व्हाट वी कैन से फॉरेन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या नजर आती है इसमें? वन इज द फॉरेन, यू कैन से लैंड, एंड अनदर इज व्हाट? इंडिजिनस, यू कैन से लैंड ओवर देयर। So this is the significant part, and this is why we can say that it is the system where these all section, whether this is all, you can say, method, you can say, came to prominence in the different part, in the different, you can say, condition and region over there। ये चीज अब क्लियर हो गया होगा, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी हिच। आई थिंक दिस थिंग मस्ट बी वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। Another thing, the history of colonialism. Please note it down. What is that? The history of practice by which? Yes, very good, very good, very good। So what is important thing over here now? Now over here, what we see, the indigenous part over there, the history of colonialism, role of exploration। सबसे बड़ी इसकी भूमिका किस चीज की होती है? इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब है मूलभूत रूप से। जैसे आप कहे जाओगे कि आप इंडिजिनस पीपुल भारत के हैं, भारत के इंडिजिनस पीपुल। इंडिजिनस का मतलब होता है पूरी तरह से इंडियन, या पूरी तरह से उस प्लेस का नेटिव जो होगा, दैट इज कॉल्ड इंडिजिनस। ओके।
Now, history of colonialism, the role of exploration, the explorations or the ways of the discovery at the end of 15th century, clubbed with the end of feudalism, played an important role to rise of colonialism. इसके इतिहास में जब हम जानते हैं कि ये डेवलपमेंट कैसे होता है, इसकी शुरुआत होती है 15वीं शताब्दी से, 15th century. So the colonialism started, the stage of colonialism also started from the beginning of what? From the beginning of 15th century. During 15th century, what has been taken place over there? The feudalism came to an end. Feudalism मैं पहले भी बता चुका हूँ कि it emerged during the medieval period. By this time, it was came to an end. ये पूरी तरह से समाप्त हो जाता है. As early as 13th century, Marco Polo यू कैन से ऑफ इटली डिस्कवर्ड चाइना. और सबसे बड़ी बात शुरू क्या होती है, एक बहुत बड़ा डिस्कवरर एक्सप्लोरर था जिसने पहली बार क्या देखते, जिसका नाम क्या था, मार्को पोलो, और उसने चीन की खोज की. चीन की खोज कैसे की थी? फ्रॉम द सिस्टम ऑफ मूवमेंट, फ्रॉम द सिस्टम ऑफ एक्सप्लोरेशन के माध्यम से. किसकी खोज की थी? चाइना की खोज. The profits for the trade increased the attraction of European ports, and the merchants made the ports, you can say, their center of activity. What important thing also came to prominence over here? जो सबसे important चीज सामने नजर आती है कि जब पोर्ट सिटी का डेवलपमेंट होता है, एक्सप्लोरेशन से क्या होता है? पोर्ट सिटी का डेवलपमेंट होता है. और पोर्ट सिटी के डेवलपमेंट से दे फेल्ट दैट if this is the major business center, this can be the center of trade and commerce, and it is going to be profitability part over there. So this is the development process of what? Colonialism. Soon towns developed in a coastal area of Mediterranean Sea, and place like Venice, Genoa increased in prosperity. What a significant thing we find over there? सबसे significant thing नजर आती है, वो क्या नजर आती है कि जितनी भी पोर्ट सिटीज है वो किस एरिया में डेवलप करती है? दिस पोर्ट सिटीज नॉर्मली डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ व्हाट वी कैन से कोस्टल रीजन. ये हॉर्मुज है, ये क्या है? रीजन क्या है? पर्शियन गल्फ का है. और इंडिया का ये क्या सब रीजन है? दीज आर द रीजन ऑफ व्हाट वी कैन से कोस्टल सिटी. These are the region of what? Coastal city. And again, if you talk about up to the region of Java, Japan and Shangdu, these all you can say places are what we can say. Even if you talk about Iran and you can say Jerusalem, these all are what? These all are coastal belt over there. तो क्या देखते हैं? कोस्टल सिटीज में, कोस्टल बेल्ट में डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू हो जाता है. दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. और फिर क्या देखते हैं? तो इटली का बड़ा नगर है जिसको वेनिस और जेनोवा के नाम से जानते हैं, का मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको. व्हाट इज इंपॉर्टेंट पार्ट यू कैन फाइंड ओवर. व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस टू यू अगेन. तो दीज आर द बिग सिटीज, दीज आर द बिग सिटीज. तो कैस्पियन सी का क्षेत्र देखते हैं, अयास का क्षेत्र देखते हैं, क्या देखते हैं? ये मेडिटेरियन सी का क्षेत्र देखते हैं. तो दीज ऑल आर द यू कैन से कोस्टल बेल्ट. और ये इथियोपिया है, हॉर्न ऑफ दिस व्हाट? हॉर्न ऑफ अफ्रीका. तो दीज आर द मेजर सेंटर टू बी यू कैन से डेवलप ओवर हियर. और अब तो क्या देखते हैं हम लोग? होन्शु जगह है, जापान है, उधर क्या देखते हैं? बीजिंग है, दादू ये शहर को नियंत्रण में किया जा रहा है. तो दीज आर द एडवांटेजेस you can say position we find in the coastal belt, or what we can say coastal region. Important part there. And it led to the idea of prosperity. और इससे क्या होता है? खुशहाली बढ़ती है, prosperity बढ़ती है. So this is the background of history of you can say colonialism over here. Now another important thing in this context is what? These are the map I have given to you, I have shown to you. Now reason for exploration, जो conditions क्या नजर आता है? कंडीशंस लिखा जाता है. डिस्कस द फैक्टर विच लेड टू द आइडिया ऑफ एक्सप्लोरेशन. यानी एक्सप्लोरेशन का रीजंस क्या था, कारण क्या था, उस तथ्य की जानकारी जब आप लेते हैं. क्योंकि यूपीएससी का जो सवाल का पैटर्न होगा, द ट्रेंड ऑफ द पैटर्न विल बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन. उस ट्रेंड का जो पैटर्न होगा, तरीका होगा, इसी के ऊपर पूरी तरह से आधारित होगा. देन so the reason, now I am going to talk about the reason, or it may be known as what we can say the factors, or it may be the you can say point like that causes. तो कभी भी घबराना नहीं, you won't have to worry about that too. If the question is going to ask about the reasons, if the question ask about that the factors, if the question ask about the causes, so more or less the terms are same.
But so far factor is concerned, you should have to be a bit critical over there. जब factor की बात करेंगे, then what you have to do, you should have to be a bit practical in this field. If the term is going to be what? If the term is going to be the factors over there. These coastal towns enjoyed freedom from the rural-based system of feudalism. यहाँ पर अब सबसे अच्छी चीजें क्या नजर आती है? The people were in the beginning, we are very much happy because based on what the hello. तो 6 बजे उसका है क्लास. ठीक है, नथिंग टू वरी. So what is that? Based on the system of what? System of feudalism. What we can say that this is the system of feudalism. And in the system of feudalism, the serfs were free in these towns, and thus migration from the village to the towns, you can say, gained peace. और क्या देखते हैं कि यहाँ माइग्रेशन की जो बात नजर आती है, villages to the town gained peace. क्या नजर आता है? Peace नजर आता है. What important development has taken place? What the people felt, you can say, relax a bit here. यहाँ पे क्या नजर आता है? Reason for the, you can say, for exploration and development process. Here I would like to make it clear about that too. Conditions क्या नजर आते हैं? What the situation we find over here? देखते क्या हैं? During the period of 15th century and beyond that, what we see, what is the significant part we find over here? We find that what important thing that is noticeable part of that, we find that हम पाते क्या हैं during the period of medievalism या medieval age की बात नजर आते हैं, तो क्या देखते, feudalism is going to be an end. feudalism क्या होता है? feudalism समाप्त होता नजर आता है. लेकिन जो दूसरी सिटी है, दूसरा टाउन है, and these towns are what? These are the coastal belt, and these coastal belt enjoyed a lot. क्योंकि इस रीजन में भी पोर्ट सिटीज है, इस रीजन में भी पोर्ट सिटी है. This is the area of what? This is the area of what? Arabian Sea, and this is the area of what? Was the Bay of Bengal. So these cities became the prosperous part of that. तो एक तरफ फ्यूडलिज्म से लोग परेशान होते हैं, सामंती प्रथा से, लेकिन जो सिस्टम है वो डेवलप कहाँ कर रहा है? The coastal region of the country or the place over there. So this is very, very technical and important part regarding factors which led to the development of what? Led to the development of geographical discoveries, and exploration was also the factor over there. The emergence of geographical map is also the major factor over there. Reason for exploration. Now the second thing, the kings who in the feudal system, what is that? The king who were in the feudal system were dependent on the subordinate lords, or you can say military help to them. Despised the power of feudal lords, and the church patronized the merchants and funding to their voice. जैसा कि मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को, वो बताया क्या था कि चर्च का बोलबाला था मेडिवल पीरियड में. चाहे इंडिया की बात करें मंदिर थी, यूरोप की बात करें मंदिर था, तो चर्च था, और पूरा कंट्रोल मैकेनिज्म किसके हाथ में था? दैट इज इन चर्च, इन व्हाट वी कैन से वेस्टर्न कंट्री, एंड यू कैन से इन एशियन कंट्री इंडिया, इट वाज व्हाट? टेम्पल पार्ट ऑफ दैट. और कंडीशंस क्या थे? द फ्यूडल्स वेयर वेरी स्ट्रॉन्ग एनफ एट दैट टाइम, and they were independent in their own views and ideas because there were no any centralized empire. उस पीरियड में क्या था? कोई centralized empire नहीं था. And the merchant in turn aided king so the escape from the feudal control. और क्या था? merchant इसको ज्यादा बढ़ावा, king इसको ज्यादा बढ़ावा देता है. किसको? ट्रेडर्स को. कारण क्या था? ये ट्रेडर को कंट्रोल करना आसान था in comparison to the feudal lord. So this encouraged for the development of colonial activities and colonialism over there. क्योंकि था क्या कि they were the trader, उनका आना जाना एक temporary process था, not a process like a feudal condition over there. So that is why it was very easy for the king, princes and ruler to control the traders rather than control the what we can say feudal lords or feudal. So this way it was encouraged at that time. क्या देखते हैं कि उस पीरियड में colonialism का encouragement होता है. This is the factor to the rise of what? To the rise of what? Colonialism. The monetary profit became the most important reason for exploration. और exploration का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? मॉनेटरी पॉलिसी को बढ़ावा मिलना, मॉनेटरी पॉलिसी का डेवलपमेंट होना, और मॉनेटरीली बेनिफिट के रूप में. That is significant part of that, which brought goods and that could be sold at home at much higher margin. और क्या देखते हैं? हायर मार्जिन के रेट पर उसको जो है कंट्रोल किया जाने लगा. एंड वास्को डी गामा इन 1498
फाउंड द प्राइस ऑफ यू कैन से पेपर इन इंडिया इन 1/12 ऑफ द वेनिस। क्या नजर आता है कि 12 गुना ज्यादा कीमत पर क्या देखते हैं, पेपर खास कर करके भारत से जो है कि नहीं बिक्री इसकी, और स्पाइसेस की भी बिक्री होती है कहाँ, वेनिस के शहर में। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, स्पाइस ट्रेड विद मोस्ट ऑफ द ल्यूक्रेटिव, और क्या देखते हैं जो स्पाइस का ट्रेड भारत से हो रहा है उसमें पैसे बहुत आ रहे हैं, ल्यूक्रेटिव है, कैश डीलिंग हो रही है। दिस वाज इंपॉर्टेंट फीचर which encouraged the trade and commerce and other activities there. Venice, the spices were transported to the Western and Northern Europe, and Venice became extremely prosperous by charging huge tariff। और वेनिस क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा चार्ज करता है, ज्यादा से ज्यादा चार्ज करता है। एंड रिकॉल रेनेसा इन 14th century बिगिन फर्स्ट इन इटली, और याद कीजिए आप कि सबसे पहले रेनासा जो 14वीं शताब्दी में शुरू होता है वो कहाँ होता है, इटली शहर से शुरू होता है। एंड ज्योग्राफी प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोलोनियलिज्म। और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सबसे बड़ी भूमिका किस चीज की नजर आती है, ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की एंड ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशंस की। उस पीरियड में इसको सबसे बड़ा लाभ किससे होता है, ज्योग्राफिकल यू कैन से डिस्कवरी से। सो इमर्जेंस ऑफ ज्योग्राफिकल मैप, उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या नजर आता है, ज्योग्राफिकल मैप की तैयारी शुरू, यानी भौगोलिक जो मैप होता है, भौगोलिक जो बनावट होती है उसकी शुरू हो जाती है, ज्योग्राफिकल मैप की शुरुआत होती है। और जब ज्योग्राफिकल मैप की शुरुआत होती है तो प्रोसेस में क्या है, डेवलपमेंट का प्रोसेस भी फास्ट होता है विद द डायरेक्ट एक्सेस टू द मिडिल ईस्ट। अब क्या देखते हैं, मिडिल ईस्ट जो सेंट्रल एशिया का रीजन है वहां पर एक्सेस काफी आसान हो जाती है। यूरोपियन वे आर फोर्स टू पे हाई प्राइसेस चार्ज बाय द वेनिस, इवन द वेल्दी ऑफ द ट्रैवल पीपल वर पेइंग स्पाइसेस। क्या देखते हैं, वेनिस ज्यादा चार्ज शुरू करना पड़ता है, तो ये लोगों ने कहां से रास्ता को ढूंढ लिया, उन्होंने मिडिल ईस्ट से रास्ते को ढूंढ लिया। दैट दिस वाज व्हाट मिडिल ईस्ट, सी दिस कंडीशन ओवर दियर। दिस इज द प्लेस ऑफ इंडिया, ये कहां से स्पाइसेस ले रहे हैं, इस रीजन से ले रहे हैं स्पाइसेस, और कहां लेके जाना है इनको, इनको यूरोपियन मेडिटेरियन में लेके जाना है, मेडिटेरेनियन में लेकर के जाना है। लेकिन यहाँ पे चार्जेस हाई हो रहा है, तो क्या देखते हैं रास्ता, ये पर्शियन गल्फ से होकर के जाते हैं, या फिर जो दूसरा रास्ता नजर आता है रेड सी का एरिया है जहां से तुरंत यूरोप के क्षेत्र में जा सकता है। तो दीज वेयर द बेनिफिट ओवर देयर, और इसका कारण क्या था, ज्योग्राफिकल मैप का डेवलप हो जाना, दैट वाज इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर देयर। तो ये क्या देखते हैं, ये क्षेत्र है इंडियन ओशन का नजर आता है, ये क्या नजर आता है, ये नजर आता है यू कैन से इट इज अरेबियन सी। ये क्या नजर आता है, अरेबियन, ये क्षेत्र कौन सी इसका, बे ऑफ बंगाल का है। So this is the advantage they find over there with the development of geographical map, the development of what we can say with the development of geography all। अब conditions क्या देखते हैं, the route to east were known by the name of silk route। अब इसको silk route कहा जाता है, जो ऊपर से रास्ता जाता है। Along with the Venice, it was the Byzantine Empire with its capital at Constantinople की बात करते हैं, which acted as a middleman in this trade with the east, and these two lays long trade routes and had power to choke them, you can say, if they wanted 14,000 and 1453। क्या देखते हैं, ऑटोमन एम्पायर का भी डिफीट हो जाता है और बेजेंटाइन एम्पायर फॉल हो जाता है। द यूरोपियन हैड टू डू समथिंग अबाउट द दिस पेव्ड द वे फॉर वॉयजेस ऑफ डिस्कवरीज। क्या देखते हैं, जब ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज की खोज शुरू हो जाती है तो क्या देखते हैं कि एक्सप्लोरेशन की भी प्रक्रिया शुरू होती है। उस पीरियड में क्या देखते हैं कि बेजेंटाइन एम्पायर का भी फॉल नजर आ रहा है, ट्रेडिंग एक्टिविटीज बढ़ रही, पर सून ड्यू टू इनवाई इन प्रॉस्पेरस इटालियन ट्रेडिंग सिटीज यू कैन से ब्लॉकेड अप टू द ऑटोमन एम्पायर। अब क्या देखते हैं, ट्रेड का कंपटीशन शुरू होता है, एक तरफ ऑटोमन एम्पायर है, दूसरी तरफ बेजेंटाइन एम्पायर है, रोमन एम्पायर की बात करते हैं। The quest for finding northwest route led to the discovery of Canada and by John Cabot Britain। क्या देखते हैं, जब रूट को चेंज किया जाता है तो कनाडा की खोज हो जाती है, कनाडा की खोज होने के बाद वहां भी ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट शुरू होता है। विद द एक्सप्लोरेशन ग्रेजुअली द ज्योग्राफिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड इमर्ज, और ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज के माध्यम से दुनिया का ज्योग्राफिकल मैप तैयार हो जाता है। अनदर क्या देखते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से क्या नजर आता है, हम लोगों को ज्योग्राफिकल डेवलपमेंट जैसी चीजें नजर आती हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। Another important thing in another map I would like to show to you,
Another major development which has taken place, so this is the condition. क्या देखते हैं, ये ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज है ना, दीज आर द एरिया सीरियाज के होते हुए क्या देखते हैं, पूरे के पूरे अरेबियन गल्फ का एरिया कवर हो रहा है ना। फिर क्या देखते हैं कि ऊपर का एरिया कवर हो रहा है, दिस इज, आगे जाते हैं तो नॉर्थ अमेरिका के क्लियर है। और ये दिस इज द सिल्क रूट, एक तो रूट आपने क्या देखा, दिस वाज द सी रूट, ये कोस्टल बेल्ट है, और जो दूसरा रूट है स्टिल ये प्रिवेल करता है, दिस इज व्हाट चाइना सिल्क रूट, क्या देखते हैं, ये सिल्क रूट, दिस इज द सिल्क रूट ओवर देयर। और ये जो प्लेस क्या है, इट इज व्हाट वी कैन सी चाइना, तो ये चाइना का जो प्लेस है, ये सिल्क रूट भी उस समय में विद्यमान है। तो दैट इज द मेजर डेवलपमेंट एट दैट टाइम, और पूरा के पूरा अरबिया की जानकारी मिल जाती है, ट्रेडिंग एक्टिविटी, इन लोगों का आपस में कन्फ्लिक्ट भी होता है, और इन द दीज प्रोसेस कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है development of, you can say, this development process has also led to the idea of what emergence of geographical map. Another important, the quest for finding North America की भी जानकारी हो जाती है। फिर क्या देखते हैं, geographical map से पूरी दुनिया के मैप का इमरजेंस हो जाता है। This was again the major development over here. Another important thing, the technical innovation, जो तीसरी चीज पे ध्यान देंगे हम लोग, क्या देंगे, this was a technical innovation. The technical innovation played an important role in success of explorer in being able to sail the new island. तो क्या देखते हैं, तो बड़ी बड़ी बोट बनती है, मैकेनिकल बोट बनती है, स्टीम बोट बनती है, क्या देखते हैं, सेलिंग बिकेम इजी पार्ट ऑफ दैट, और दूर की का जो सफर है या दूर की यात्रा को सफर तय करना आसान हो जाता है। एंड बाय द एंड ऑफ 15th century, innovation in the form of compass, then Aristotle, these all things were developed in a certain period. And art of mapping and development of what we can say, that the compass was also came to prominence, and the direction producer was also came to prominence over here. And the better ship could travel longer, improved explore knowledge of geography by the sea. और पहली बार क्या देखते हैं कि एक एक्सप्लोरेशन से नॉलेज किस चीज का डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट होता है एक्सप्लोरेशन बाय सी। लैंड का एक्सप्लोरेशन कैसे होता है, व्हेन अलेक्जेंडर केम टू इंडिया, व्हेन द मुगल केम टू इंडिया, व्हेन द टर्किश केम टू इंडिया, व्हेन द कुशानास केम टू इंडिया, we understand about the exploration route by the land route. And what has happened in the modern age, it was the discovery and development of what, development of sea routes. So it has helped a lot for searching out the whole world. And again, one of the significant thing, Iftikhar and Ajmal bhai, you should have to keep in your mind कि मॉडर्न पीरियड की जो सबसे बड़ी खोज नजर आती है, वो समुद्री रास्ते से भारत का सफर तय करना। क्योंकि एंशियंट पीरियड में हम लोग क्या देखते थे, मिडिवल पीरियड में हम लोगों ने क्या देखा है, भारत है, ये इंडिया है, इंडिया का जो भी आक्रमण हो रहा है कहां से, इधर से हो रहा है, इधर से हो रहा है, इस रीजन से हो रहा है। ये रूट क्या है, लैंड रूट है, और कुछ जो रीजन वहां से हो रहा है, ये चाइना से भी हो रहा है, झारखंड काशागार है। इस पीरियड में क्या देखते हैं, एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि डिस्कवरी इस पीरियड में नहीं हो पाई थी, नहीं कोई मैप का डेवलपमेंट। So this significant thing you should also have to keep in your mind, that the geographical discoveries were the major factor for development process for making the country towards the modern age or modern era. और ये डिस्कवरी इतनी पावरफुल थी कि अभी भी जितना हेवी सामान होता है या जितना ज्यादा सामान होता है बल्क में, वो सभी सी रूट से आता है, उसकी कॉस्टिंग भी कम हो जाती है। लेकिन अब जो प्रोसेस है वो स्लो नहीं है, वो हवा के जरिए नहीं आता है, वो मैकेनिकल पावर, बोट के पावर के जरिए आता है। तो दैट इज वेरी मच सेफ, and that is very much, you can say, cost effective. And that is the reason that is the reason is that all the oil companies used to set their, you can say a big, you can say, ship through the system of what we can say trading activities in the region of the western coast also. तो इस प्रकार क्या देखते हैं कि ज्योग्राफिकल डिस्कवरी से भी ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट आता है। नाउ द थर्ड थिंग इज व्हाट, टेक्निकल इनोवेशन। अब टेक्निकल इनोवेशन की बात जब करते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि बोट इंजन डेवलप करता है। 15वीं शताब्दी में क्या देखते हैं, कैंपास आ जाता है, एरोस्ट्रो लैब आ जाता है, जिससे रूट का पता चल जाता है, मौसम की जानकारी मिलती है। दे वे आर ऑल्सो एबल टू डेवलप एक्यूरेट मैप ऑफ सी रूट का एक्यूरेट मैप मिल जाता है। इन नॉलेज वेदर द वेदर पैटर्न की जानकारी मिल जाती है कि कोई समुद्री तूफान तो नहीं आ रहा है, तो लंगर डाल दिया गया या फिर प्रोसेस को स्टॉप कर दिया गया। दिस वाज आल्सो केम टू प्रोमिनेंस बाय दिस पीरियड।
they were able to develop accurate map हो जाता है. The period around the 15th and century came to be known as age of discovery. और जो 15वीं शताब्दी का जो एज है या काल है, इसे क्या कहते हैं? अजमल भाई मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? अगर समझ में नहीं आ रही तो नो कीजिए, समझ में आ रही है तो यस कीजिए, या कोई डाउट है तो सवाल लिखिए, मैं जवाब दूंगा. बट द टाइम शुड बी ओनली 30 सेकंड फॉर यू अजमल भाई, नथिंग टू वरी. So what is the important thing? He had touched the shores of the Haiti but mistook to the India. और होते क्या हैं? उन्होंने हाइटी को टच किया था कि हम हाइटी पहुंच गए हैं, लेकिन हुआ क्या कि वो भारत की ओर एक्सप्लोरेट कर करके पहुंच गए. तो क्या देखते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस की बात उसके पहले आ जाती. So this is why they called the native as Indian as the island of the Indies. In 1498, headed by the Portugal, Vasco da Gama discovered India by traveling from Europe to India. You can say converting this idea of, you can, west of hope is equal to what you can say South America or South African region, you can say. So known as the age of discovery, Christopher Columbus find क्रिस्टोफर कोलंबस ने और कौन शहर को डिस्कवर किया? स्पेन को. एंड वेंट टू सच ए वे एंड लैंडेड द सेंट्रल अमेरिका. अब क्या देखते हैं, जब स्पेन की खोज कर ली जाती है तो फिर ये आगे शहर को पहुंचते हैं. आगे जो नगर होता है वो सेंट्रल अमेरिका के नाम से जाना जाता है. फॉर द मेजर डेवलपमेंट ओवर हियर. नाउ डिफिकल्ट डिस्कवरीज की बात मैंने की आप लोगों से. 1491 में वास्को ड गामा करता है. देन अनदर कंडीशन इज दैट the process of colonization came to prominence. This colonization is what? Colonization किसका होता है? Colonization of Asia, colonization of Africa, colonization of America and colonization of South America. सबों का colonization होता है, लेकिन सबसे ज्यादा colonization exploitation किसका हुआ है? अफ्रीका का हुआ है. सबसे कम किसका हुआ है? अमेरिका का हुआ है. और सेकंड नंबर पे कौन आता है? भारत एशिया का होता है. तो क्या देखिए, ये लोग फोकस देते हैं किस पे गोल्ड है, ग्लोरी है और गॉड पे. और इनके एक स्लोगन बन जाता है, गॉड ग्लोरी एंड गॉड ग्लोरी एंड गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड. ये स्लोगन बन जाता है, गोल्ड ग्लोरी एंड गॉड, द सिस्टम ऑफ कोलोनाइजेशन. While the gold represented the profit from the trade, glory represented the recognition of European power received there, and flag of the kingdom is what we can say. It came to the missionaries of the, you can say promote Christianity. और पहली बार फ्लैग का इस्तेमाल कब होता है? क्रिश्चियनिटी के बिगिन होने के बाद. और फिर क्या देखते हैं, जब एग्जिस्टेंस हो जाती है. इकरा इफ्तिखार when the Columbus there no existence. Yes, there was not at all an existence in a bigger way, in a bigger manner. It was not there. लेकिन चीजें तो परसीव हो रही थी ना. जिस जगह पे उसने खोज किया था, पॉपुलेशन थी, जानकारी थी लोगों को, क्योंकि 15th सेंचुरी तक भारत बहुत आगे था ना, लेकिन उस पॉइंट पे वो नहीं पहुंच पाए थे. इंडिया एग्जिस्टेड वेरी वेल एट दैट टाइम, क्योंकि इंडिया का पीरियड एंशिएंट पीरियड है, प्री हिस्टोरिक पीरियड भी है, एंड कोलंबस विजिटेड ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. ओके, so a large fleet of the merchant ships were marked to the trade volume, spread across external march to the strong navy. अब क्या देखते हैं, नेवी भी बहुत स्ट्रांग. Navy became also very stronger part over there, and the country which has able to have friendly harbors, only the trade route in the form of ports was called ship could be there, and thus mercantile capitalism went in hand and colonialism with other part of that. अब क्या देखते हैं, मर्केंटाइल कैपिटलिज्म डेवलप हो जाता है. मर्केंटाइल कैपिटलिज्म का मतलब क्या है कि जितनी भी पूंजी है वो सारे के सारे मर्चेंट के पास है, सारे के साथ ट्रेडर के पास है. तो क्या देखते हैं, एक पूंजीपति वर्ग इससे विकसित होता है. तो कॉलोनियलिज्म का जो इम्पैक्ट होता है, डेवलपमेंट होता है, जो कम्युनिटी का विकास होता है, दैट इज व्हाट? मर्केंटलिज्म. मर्केंटलिज्म का मतलब मर्चेंट क्लास की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होती है, दैट इज कॉल्ड मर्केंटलिज्म. Another important development which can talk about that too, mercantilism went hand in hand and colonialism with the latter part of that. Colonialism latter part में आ जाती है. As mentioned earlier, many new commodities entered to the basket and production like potatoes and other part of the part that. What is that? Many more conventional things were not liked and not continued by this people. क्या देखते हैं? As mentioned earlier, many new commodities entered to the trade basket. Products like पटेटो. याद रख लो आप लोग जल्दी से कि सबसे पहली बार पटेटो, आलू भारत का नहीं है, खाते हैं जो आप लोग.
आलू, इट केम फ्रॉम व्हाट वी कैन से पोर्चुगीज, पुर्तगाली, पोटैटो। फिर क्या देखते हैं, टोबैको, टोबैको भी बाहर का है। मेज, मक्का खाते हैं, इट इज अगेन फ्रॉम द अदर कंट्रीज ओवर देयर। एंड स्पाइसेस वाज द इंडिजिनस इंडियन। इंडियन क्या नजर आता है, स्पाइसेस, जिसको कहते हैं गरम मसाला, विच वेर हिदर टू अननोन टू द यूरोपियन ट्रेड। और यूरोपियन ट्रेड के लिए पूरी तरह से अनभिज्ञ था, वो लोग पूरी तरह से इसके बारे में नहीं जानते। लेकिन यहां से इसलिए ले जाते थे because they were non-vegetarian people, and due to non-vegetarian people they love to have what we can, they love to have to have, you can say, the non-vegetable food. Mercantile capitalism का मतलब क्या हुआ, जो मर्चेंट वर्ग थे, जो ट्रेडर थे, उनके पास जब पैसा आ जाता है तो किस है, उनका प्रोसेस है क्या, मर्केंटाइलाइज, मतलब है कि बिजनेस। कैपिटलिज्म का मतलब पूंजी। तो इस पीरियड में सबसे ज्यादा पूंजी किसके पास है, मर्केंटाइल, मर्चेंट के पास है। ना तो किंग के पास है, ना लोअर लोग के पास है, क्योंकि लोअर पीपुल का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और अमीर वर्ग कौन है, मर्केंटाइल कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट उसी समय से उन लोगों के पास है। एज मेंशन मेनी न्यू कमोडिटीज, और बहुत सारी नई कमोडिटीज स्टार्ट कर गई। बास्केट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पोटैटो से लेकर के अदर पार्ट ऑफ द एडिबल मटीरियल वाज आल्सो फाउंडेड ओवर हियर। अदर चीजें भी वहां पे पाते हैं, है ना। एस धवन सर, very good afternoon, good evening. So you are coming late, as Dhawan. How are you? I think you must be fine. The topic which I am going to discuss and discussing about that too, it is colonialism and other part of that. So as mentioned earlier, what is that? The colonies served as a source of raw material. और कॉलोनीज का जो सबसे बड़ा पर्पस क्या नजर आता था, इट सर्व एज अ मेजर सोर्स मटेरियल। कॉलोनी का ऑब्जेक्टिव क्या था, कि सोर्स मटेरियल, रॉ मटेरियल जितनी भी मिलती थी, कहां से मिलती थी, कॉलोनियों से मिलती थी। इसलिए जो बड़ा पावर था कॉलोनी को कंट्रोल करता था, ताकि उसका एकमात्र उद्देश्य क्या था, इकोनॉमी। इकोनॉमी वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फेसिट। So Mr. Dhawan, 4 o'clock daily you will find the world history classes from international relation point of view and history point of view, you can say paper first of the, you can say, history of the mains examination. So that is important. Similarly, rice, coffee and cotton resources were also exploited. अब क्या देखते हैं, राइस कल्टीवेशन की बात मिलती है इंडिया से, कॉफी प्रोडक्शन मिलता है क्यूबा से, और अदर इंडस्ट्रियल क्रॉप आल्सो केम टू प्रोमिनेंस। और इसमें सबसे ज्यादा किसकी भूमिका थी, शुगर केन। Cuba was the main country, America was the main country, even though India was also the main country, but the introduction of sugar was, you can say, introduced in a larger scale in India by the Europe. The European established a trading port in the coastal area of the Newfoundland. क्या देखते हैं, ट्रेडिंग पोर्ट को एस्टेब्लिश कर लेते हैं, और उस प्रकार वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नाउ द मर्केंटाइल कैपिटलिज्म, एज यू आस्क अबाउट मी, आरजे मन, भाई बंदा, यू आर ए बिट डूइंग डिले। आप डिले मत करो, डेली 4 बजे मेरे क्लासेस मिलेंगे आपको। समझ में नहीं आ रहा, आपने बीच में डिले स्टार्ट किया है ना। मैंने टॉपिक जो पढ़ाया है उसका नाम है कोलोनियलिज्म, और एक टॉपिक में बता रहा हूं मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। आरजे मान, आपको पता चल जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय मर्केंटाइल कैपिटलिज्म। सबसे पहली चीज तो मैं ये डिफाइन कर दूं कि मर्केंटाइल कहते किसे। मर्केंटाइल उसे कहते हैं जब एक बिजनेस ग्रुप, व्हेन ए business group earn their money from what we can say different colonies of the world. जब एक बिजनेस ग्रुप, यानी कहा जा सकता है मर्चेंट ग्रुप, दूसरे राष्ट्र के क्षेत्रों से आर्थिक उगाही करता है, किस माध्यम से, ट्रेड एंड कॉमर्स से। ट्रेड एंड कॉमर्स का साधन क्या है, उस कंट्री में पैदा होने वाला मिनरल रिसोर्सेज। जैसे भारत में आए थे विदेशी, है ना, आए थे तो क्या ले जाते थे, शुरू में इन द वेरी बिगनिंग स्पाइसेस, गरम मसाला ले जाते थे, आमदनी होती, फिर कॉटन ले जाते थे। तो क्या देखते हैं, इनके द्वारा किया गया प्रक्रिया, द एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द ब्रिटिश कम्युनिटीज, दे वर नोन एज मर्केंटाइल बिकॉज दे डेवलप्ड इन अ ग्रुप। बिजनेस कम्युनिटी क्या देखते हैं, मर्चेंट कम्युनिटी एक ग्रुप में डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड मर्चेंट ग्रुप, एंड द एक्टिविटीज आर नोन एज mercantile. Is it clear to you? So the merchant group, when they used to do a similar work for the profit purpose, is called mercantile group. And what do you mean by capitalism? Capitalism का मतलब क्या है, जो मर्चेंट ग्रुप के पास पैसे आ रहे हैं, कैसे, एक्सप्लोरेशन के माध्यम से, ट्रेड एंड कॉमर्स के माध्यम से,
कॉलोनी के माध्यम से दिस टर्म वाज नोन एज मर्केंटाइल कैपिटलिज्म. Is it clear? Is anyone has doubt? Please ask me before finishing this topic over there. Is it clear, everyone? Now, the policy of mercantile capitalism involved attacking merchant vessels to the other kingdom. क्या देखते थे? जो बड़े बड़े समुद्री जहाज पे सामान जाता था, तो एक कम्युनिटी चाहता था कि भाई उसको लूटा जाए, उसको रोका जाए, उसको ब्लॉक किया जाए. क्योंकि क्या होगा कि वो दूसरी कंट्री का विकास नहीं होगा. तो प्रोसेस क्या था? आपस में कंफ्लिक्ट किस माध्यम से होता था? मर्चेंट के माध्यम से होता था, सी रूट में होता था. एंड सेटिंग अप कॉलोनीज, प्लेसिंग ट्रेड बैरियर्स, मोनोपोलाइजिंग द ट्रेड विद द कॉलोनीज ऑफ द अनएबल टू कॉलोनाइज देयर सिक्योरिटी. कंडीशंस क्या नजर आता है? हर एक कंट्री चाहता है कि ट्रेड को मोनोपोलाइज करे. मोनोपोलाइज का मतलब आप समझते हो ना कि केवल उसी का ट्रेड हो. जैसे भारत में 5 ट्रेडिंग कंपनी आई थी, जिसमें पोर्चुगीज थी. पोर्चुगीज के बाद क्या नजर आते हैं? डच थी. डच के बाद क्या थी? डेनिश थी. डेनिश के बाद क्या थी? फ्रेंच थी. फ्रेंच के बाद ब्रिटिश थी. अल्टीमेटली क्या नजर आता है? इस सबों को समाप्त कर मोनोपोली किसकी बन जाती है? इंग्लिश की, ईस्ट इंडिया कंपनी की. So these activities were performed around the world. पूरी की पूरी. Sir, first country came to India for the, tell me, it was Portuguese, पुर्तगाली थी. Portuguese, कालीकट पहुंचता है वो western port cities में. So that was the country over there. And finally what we see that East India Company retain over there. East India Company की monopoly यहाँ पे बन जाती है. So this is what we can say that mercantile capitalism. The Portuguese had established trade monopoly in Asia after discovery of the trade. तो सबसे पहले कोई जो कंपनी अपना ट्रेडिंग एस्टेब्लिश करती है, वो कहाँ एस्टेब्लिश करती है? भारत में. और वो कौन कंट्री थी? पुर्तगाली थी. सबसे पहले पोर्चुगीज, यू कैन से. एंड दे रीच टू दिस कंट्री वाया द कैप ऑफ गुड होप. एंड होप in 1498 and thus replaced the Italian monopoly of trade with the East. और पहले किसकी थी? टेक्निकल गैमर यार, तुम ढेले क्यों कर रहे हो? कल भी आप 6 बजे 5 बजा दिए थे. एंड टुडे इज ऑल्सो ट्राई टू बी बच्चा, यू हैव टू बी, यू कैन से 4 o'clock आप जरूर स्टार्ट रहो. आई वुड बी देयर, क्योंकि लगातार क्लासेस हैं हम लोगों के. अभी तुरंत 5 बजे से फिर एक क्लास है, फिर 6 बजे से है, फिर 8 बजे से है. तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. द टाइम इज वेरी मच कंस्ट्रेंट. और मैं अनाउंसमेंट कर दे रहा हूं, the day after tomorrow you will find a complete package of prelims. You can say complete history, ancient history, medieval history, modern history, a complete package of 40 days or 40-hour program the day after tomorrow. So this is important thing. Now the latter Portuguese were replaced by Dutch. और पोर्चुगीज किसके द्वारा रिप्लेस होती है? डच के द्वारा. और डच किसके द्वारा रिप्लेस होती है? ब्रिटिश के द्वारा. और फिर क्या देखते हैं? फ्रांस जो है कि नहीं रिप्लेस हो जाती है ब्रिटेन के द्वारा. So this is the major part I discussed to you, and certain rest of the part tomorrow I will discuss about that. Impact of colonialism, objective of impact of industrial revolution I will discuss tomorrow, because today the time is very much constrained for me. Okay, so very sorry भाई technical gamer, आज आप लेट से आए. Dhawan, you have also joined बच्चा late, but be ready for from tomorrow. It will be sharp 4 o'clock world history. And world history I am conducting this class covering the dynamics of the international relation as well as the world history. Okay, this package is available for Unacademy Plus. Join, आप कर सकते हो. Use my referral and you will find over there. Nothing to worry about that. Whatever the facility you require from my side, I am 24/7 available to provide you support, any kind of support regarding teaching, regarding your excellency of writing skills, essays and other part of that. Okay, so thank you very much of joining. Please write comment over there. Please write as strong as comment over there, and be the part of the member of Unacademy. I am ready to provide you all the packages, all the benefit. Thank you very much.